plastic painting. हाय फ्रेंड्स, एक्टर किड्स विद परेशिवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी प्यारे दोस्त परी हूँ। तो अभी शाम हो रही है और ये हमारा स्टडी का टाइम है। तो मैं भी स्टडी कर रही थी और मेरा भाई भी स्टडी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूँ। अब इसके बाद मैं एक इमेजिंग ड्राइंग करने वाली। अभी मैं दिखा देती हूँ कि ये ना मेरा भाई क्या पढ़ रहा है, क्योंकि वो शायद से ओलंपियाड ही पढ़ रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ या दिसंबर या नवंबर में उसका ओलंपियाड है, तो उसी के लिए पढ़ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है। हाय दोस्तों, मैं अभी मेरा ओलंपियाड आने वाला है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। शिवा भी क्या कर रहा है? शायद से होमवर्क लिख रहा है। नहीं, वर्ड प्रैक्टिस कर रहा है, वर्ड मीनिंग्स एंड न्यू वर्ड्स। ये देखिए, तो ये है मेरे ओलंपियाड बुक्स। ये है मैथमेटिक्स, जिसके शिवा ने 3 चैप्टर कर लिए हैं। ये है सोशल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज, जिसके शिवा ने 3 चैप्टर कर लिए हैं। और ये है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके शिवा ने 2 चैप्टर किए हैं। मुझको मैथ में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैंने 4 चैप्टर कर लिया। तो मैं 10 दिन में इस बुक का खत्म करने वाला हूँ। अब मैं ये 10 डेज में ये फिनिश करने वाला, मतलब कंप्लीट 10 डेज। वाओ, मेरे को तो लगा था कि और पता है, मैंने लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज मैंने 3 चैप्टर कर लिए। मेरे को तो लगता है कि एक या आधे महीने में ख़त्म हो जाएगा ये। और ये इसके मैंने और शिवा ने दोनों ने मिल के किया है, तो ये भी 2 ही चैप्टर हुआ है। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा, इन्हीं दोनों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, क्योंकि इसमें शिवा ने 3 चैप्टर कर लिए, इसमें 3 चैप्टर हो गए। ये है मेरा ड्राइंग बुक, स्केच बुक, जिसमें मैंने 3 ड्राइंग बनाई है। पहला है स्वास्तिक। तो कैसा लग रहा है मेरा स्वास्तिक? एकदम अच्छा दीदी। फिर मैंने बनाया है रेनकोट से पहनी हुई गर्ल, बारिश में नहा, मतलब जा रही है घर। तो मैंने आर से एक रेनकोट पहनी लड़की को बनाया है। फिर मैंने बहुत सारे सुंदर बबल्स बनाए हैं। तो कैसी लगी मेरी ड्राइंग? ये मेरी फेवरेट ड्राइंग है। अगर ये ड्राइंग आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में को बताइएगा। अभी मैं एक नया ड्राइंग बनाऊंगी, जो आपको मैं दिखाऊंगी। मैं बनाऊंगी एक डूडल आर्ट, एक बटरफ्लाई होगी, उसके अंदर बहुत सारे आर्ट होंगे, वो वाला। ठीक है, अपना ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते। चलिए साथ में मिलके ड्राइंग करते हैं। चालू करते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है, ये ही है।
इसको कलर करूँगी तो और अट्रैक्टिव लगेगा। तो मम्मी ने ना यम्मी यम्मी पैनकेक बनाए हैं तो मैं इसे खा रही हूँ। Along with Captain Gooding, and there we saw the men and boys as thick as hasty pudding. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle, mind the music and the step, and with the girls be handy. पेन का बॉक्स इसमें मैं कलर दूंगी और Will not ride without them. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Yankee Doodle went to town riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Yankee Doodle went to town riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, mind the music and the step, and with the girls be handy. Father and I went down to camp along with Captain Gooding, and there we saw the men and boys as thick as hasty pudding. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. And there was Captain Washington and gentle folks about him. They say he's grown so tarnal proud he will not ride without them. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
ये रहा मेरा डूडल आर्ट बटरफ्लाई रेडी। कैसा लग रहा है? अमेजिंग। पहले जब मैंने ड्राइंग किया तो भी अच्छा लगा, कलर किया तो और कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर। वाह, तुमने कितना अच्छा पेंटिंग किया है। क्या आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि मेरा ड्राइंग आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया ब्लॉग करेंगे, तब तक के लिए बाय।